Hi friends, how are you doing today? This is Ramandeep Singh and you're watching YouTube channel IELTS Coaching. This video is going to be very helpful for you because I'm going to share and discuss one of the recent IELTS exam in my city Moga. One of my students took this exam and he shared his experience, and now I'm going to share each and every question the examiner asked to the student, and I will also share what can be the reasonable answers to these questions. I hope you have subscribed this channel already. If not, do it right now so that you can enjoy thousands of videos that would help you in your IELTS preparation. आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और जो विनर होगा उसको मिलेगा अवार्ड क्यों मिलेगा ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो का थीम भी समझ आ जाएगा। और अवार्ड अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप वो मेहनत कर लेते हैं तो अवार्ड आपको क्या मिलेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंड द अवार्ड इज you will get free access to Speaking Booster. My Speaking Booster, the book that contains all the latest speaking content, would be provided to you at no cost. अगर आप इस बुक को विन करना चाहते हैं, आपको छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो के दौरान आपको 3 डिस्काउंट कोड्स नजर आएंगे। ये कोड्स ड्यूरिंग द वीडियो कहीं पे भी फ्लैश हो सकते हैं और आपको उन कोड्स को ध्यान में रखना है। जैसे ही कोड फ्लैश हो आपको उसका नंबर लिख लेना है अपने पास, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको वो 3 कोड्स जो हैं इस प्रोवाइडेड ईमेल पर मुझे फॉरवर्ड करने हैं yourbrightfuture@hotmail.com। और जो भी हमें ईमेल्स आएंगे उनमें से एक लकी विनर को चूज किया जाएगा और उसे मिलेगा एक्सेस टू स्पीकिंग बूस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच the complete video, follow each and every question that would help you, and note down the coupon codes as soon as you see, और later मुझे आप कर दीजिए वो तीनों कोड्स ईमेल। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। रादर स्टूडेंट ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, ऑब्वियसली सबसे पहले उनसे नाम पूछते हैं, उसके बाद एक आध वेदर रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया गया, दैट हाउ इज द वेदर आउटसाइड। तो ऑब्वियसली डे टाइम, इवनिंग टाइम, जैसा भी टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग टाइम है, काफी अगर फॉग हो रखी है, द वेदर आउटसाइड इज क्वाइट हार्श एंड hostile because there is dense fog and it's chilling cold outside. So this is what you may say, but accordingly depending how the weather is outside. इसके बाद उसे 1-2 क्वेश्चन पुट किए गए, whether she is a student or she is working, और उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, tell me something about the locality in which you live. So obviously locality का मतलब है जो एरिया, जो शहर का इलाका जहां पर आप रह रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं it's a developed area of the city या not much developed area of the city, quiet है या full of buzz है। जो areas close to the city center रहते हैं वो easily accessible रहते हैं to all the facilities, but unfortunately यहाँ पर काफी disturbance रहती है, काफी noise रहती है। However, you can say that I live in a locality which is in the suburbs. Suburb matlab outer area, and I really enjoy the quiet surroundings, and it is certainly the cleanest part of the city. So this is what you may say for this question's answer. Then, are there many facilities where you live? तो obviously हैं चाहे नहीं है, ज़्यादातर इंडिया के लोकेलिटीज में होती नहीं है, but 2-3 facilities आप माइंड में जरूर रखिए and you can consider them. Undoubtedly the area where I live is well developed and there are all or most facilities available for the residents. For example, there is a small park, there is a library, a gymnasium, and also there is a temple where people go in the morning and evening for worship. So this is what you may consider as the answer of this question. तीसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा, डू यू एंजॉय द चेंजेस व्हिच अकर नियर योर होम टाउन, नियर योर होम टाउन, इन योर लोकेलिटी, इन योर होम टाउन। तो ऑब्वियसली चेंजेस आप सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मेरा जो होम टाउन है वो ग्रो कर रहे हैं। नाउ देयर आर शॉपिंग मॉल्स व्हिच वर नॉट देयर इन द अर्लियर टाइम्स, नाउ वी हैव बिग होटल्स। सो द आंसर कैन बी ऑफ कोर्स आई really like the changes that are happening in my hometown. For example, earlier it was not much developed and there were very limited number of facilities, but now we have shopping center, big hotels,
restaurants, cinemas, and many other facilities, and I certainly enjoy this change. And then the examiner has asked this girl that, do all age groups enjoy the facilities which are provided by your city council? Now the question is specific to age group. So certainly you should bring something that defines or justifies that yes, the different age groups are satisfied. For example, I would say indeed, they are happy because there are parks for youngsters, gymnasiums and shopping complexes for youngsters, few recreational parks and libraries for the old people where they can enjoy or mingle with their age mates. So isn't it something very easy and realistic that you may say in your speaking test as well? Next question is, what do you usually do in the park? तो ऑब्वियसली आपका कोई पर्टिकुलर रीजन रह सकता है कि आप पार्क में क्यों जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो देयर टू चिल आउट विद माई चिल्ड्रन, आई प्ले सम लाइक गेम्स विद देम. Then you can say that I go for a walk, I sit with my friends where we gossip for a while, and don't say कि मैं वहाँ पे गोलगप्पे खाने जाता हूँ क्योंकि उसके बाहर रेडियाँ खड़ी रहती हैं. I would say another realistic thing to say about is that I usually go there in the evening time when there are less people in the park. I simply sit under the shade of a tree, enjoy the sun, and read a book. Now the question is, do you like people who live in your hometown? तो अभी ये लोग पसंद हैं या नहीं, इन द लोकेलिटी और इन द होम टाउन पसंद है नहीं है भाई, लेकिन ऑफेंसिव लगेगा अगर आप कहेंगे कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है. सिंपली से दैट दे आर फ्रेंडली, दे आर वेरी सिंपैथेटिक, they are always ready to help each other at the time of need. So because of all these reasons, I really like the people who live in my hometown. So these were the questions in part 1 of this exam. The examiner asked the introductory questions, and now it was the time for the cue card, and the cue card for this student was, talk about a prize you won. So यहाँ पर शायद आपको आइडिया होगा कि मैंने आपके साथ आज ये कॉन्टेस्ट क्यों किया है. आप अवार्ड जीत सकते हैं. आपको याद होगा जब मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ शेयर किया है, थ्रू आउट द वीडियो आपको 3 कूपन कोड, डिस्काउंट कोड्स नजर आएंगे. आपको उनका ध्यान रखना है और जैसे ही फ्लैश हो वो कोड आपको लिख लेना है अपने पास, और ये तीनों कोड्स मुझे गिवन ईमेल आईडी दैट इज yourbrightfuture.moga@hotmail.com पे ईमेल कर देने हैं, और जो लकी विनर होगा उसको मिलेगा फ्री एक्सेस टू स्पीकिंग बूस्टर. तो ये एग्जाम में क्यू कार्ड था, एंड आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये क्यू कार्ड बहुत टाइम से पूछा जा रहा है. स्पीकिंग बूस्टर में इसका सैंपल आंसर है, यूट्यूब पर मेरी वीडियो अवेलेबल है. अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा. फॉलो अप्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा. द स्टूडेंट से कि उसे क्यू कार्ड के बाद काफी सारे फॉलो अप्स पूछे गए, and it can be very confusing for the student, but I always help and guide my students in a better way that how to deal with the follow-ups. वो चीज मैं आपके साथ भी अभी यहाँ पे शेयर करूंगा. The first follow-up was, what kind of prizes do students get? तो स्टूडेंट्स को कैसे प्राइजेस मिलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आप सब स्कूल गए हैं, आप सबको कभी ना कभी कोई ना कोई गिफ्ट मिला होगा. मे बी आप मेरे जैसे हो जिसको कभी भी कोई गिफ्ट नहीं मिला, दूसरों को ही देखते रहते थे. बट यूजुअली हम देखते हैं कि स्टेशनरी आइटम्स, बुक्स, ड्राइंग बुक्स, कलर्स, पेंसिल्स, देन टिफिन बॉक्स, देन water bottles. These are few of the things जो उनको as a gift या as a prize मिलती हैं. But ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं trophies and medals जो best performers को मिलती हैं during the school days. So this is what can be the appropriate answer for this question as well. Now the next question is, should student get the same prizes in sports and academics? But I believe that there should be a difference between the two, because those who want to excel in the field of sports, they are not much bothered about the gifts that they would receive otherwise. For example, अगर एक प्लेयर जो है अगर वो जोनल लेवल पर एक टीम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतती है और आप उनको जीतने पर पेन या पेंसिल का पैकेट दे दें, I really don't think that they would be happy to receive that. They should be receiving, for example, स्पोर्ट्स किट या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या स्कॉलरशिप या कुछ ऐसा that would help them in developing their skills in the field of sport. In fact, scholarships जो उनको फ्री ट्रेनिंग के लिए
benefit कर दें. In contrast, students who perform better in studies, they should receive the things that help them in studies. क्योंकि अगर एक student को, एक intelligent student को आप अगर कोई sports kit या कुछ ऐसा gift offer कर देंगे, once again he would not be happy or he would get distracted, क्योंकि उस दिन के बाद वो पढ़ना छोड़कर खेलना start कर देगा. Let's take the next question. Why should people be awarded? And ये वीडियो आपको बताएगा कि अवार्ड क्यों करना चाहिए, because then you show interest in doing the things. Motivation to encourage the children, it is very important, and it is also very important to set example for others, because when one child is honored or given some kind of award, it gives a motivation to other students as well that they should also give their best. क्योंकि अगर मैं आज के अवार्ड की बात करूं तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट मुझे सेंड कर सकते हैं या जो सबसे पहले सेंड करेगा वो विनर होगा. आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है. कूपन कोड्स को देखते रहिए और जो भी स्टूडेंट्स मुझे कूपन कोड सेंड कर देंगे, ईमेल कर देंगे, उनमें से एक को हम अवार्ड करने जा रहे हैं और वो रेंडमली हम चूज करेंगे. सो ऑल ऑफ यू स्टैंड अ चांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर अवार्ड्स ऑलवेज गुड फॉर द विनर्स? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. I personally believe sometimes award can prove to be counterproductive. Counterproductive मतलब benefit की बजाय वो नुकसान कर सकते हैं, because sometimes students start to boast. Boast करना है फुकरी मारना. हम पंजाबी वैसे भी बहुत मारते हैं कि अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप बाकी बच्चों की आगे हवा करने शुरू कर देते हो. You start boasting. You say that we are the superior, you are the inferior, क्योंकि आपको कोई prize नहीं मिला है. Similarly, I would say it also create discrimination and further demoralize those who do not receive. Because those who receive the prizes or awards, they start to humiliate, and it makes the lives of students who do not receive any prize uncomfortable. So this is what can be a realistic answer for this question. Laptop को क्या हो गया? Okay, there we go. Are prizes beneficial for students in their later life? आज आप स्कूल में हैं, आपको किसी चीज के लिए प्राइज मिला या आपको अवार्ड किया गया, ऑनर किया गया. Is it going to be helpful in your later life? Yes, indeed, as it can give you the motivation. Sometimes students feel down or low at that time when they see that they have won a prize in childhood or in their earlier age. That can give them the motivation or inspiration that they can do it or they should not give up. In fact, it is also a way to recall their achievements. For example, I still have few of the trophies that I have won during my school days, and I often see them and recall the competitions that I have won. Now, the next question is that why some companies organize a competition for customers, and it is quite common these days. You see कि different companies जो होते हैं, चाहे वो automobile companies हैं या mobile phone companies हैं, these companies organize competitions. It is just a way to attract the customers. At the same time, it is a way to promote their product. And yet another thing is that when people buy and win the products, they often tell about the qualities and the benefits of the products. Similarly, these kind of contests or opportunities for customers to win help to develop the relationship between the organizations and the customers. The next question is there any difference between the awards given to students and to the customers? I don't think that I need to repeat. You have already got the idea. We discussed earlier that students love to receive the gifts that are of some use to them. For example, stationery and other things. Here the answer can be, of course, there is a great difference between the two, because the things that are awarded to students or children are often related to education. For example, things such as stationery, pencil, pens, books, and much more. In contrast, to customers, things that they can make use in real life are awarded. For example, these days, vouchers of famous brands are quite popular. For example, Amazon vouchers, Zomato vouchers, and many more. In fact, many companies don't mind to give cash prizes to their customers as well. Last question the examiner asked to the student was,
What kind of difficulties are faced by customers while organizing competitions? और यहाँ पर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं आपके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, लेकिन not too many people participate. So organizing a contest for the customer can cost the companies a lot. First, they have to promote the contest or the competition that they are organizing. For example, they have to book the venue, they have to invite celebrities, then they have to give huge discount vouchers or expensive gifts. But sometimes the buyers or the customers do not show much interest. आई होप कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आप पूरे पैशन के साथ इस कॉन्टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं और अब तक आपके पास तीनों कोड जो हैं वो आ चुके हैं। और अगर आपसे मिस हो गया है कोई भी कोड, वापस से इस वीडियो को देखिए, fetch those codes and email me on the provided email yourbrightfuture.moga@hotmail.com। और इसके बाद कल इवनिंग में जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। Thank you very much for watching this video, and if you have gone through your real exam, don't mind sharing the complete test with me. अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ऐसे ही विद डिस्कशन आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, और अगर नहीं टाइम मिला तो एज यूजुअल जो हम रेगुलरली अपडेट करते हैं द लेटेस्ट टेस्ट वीडियोस विद यू, वो हम डेफिनेटली अपलोड करेंगे विद योर नेम एज वेल इफ यू वांट टू शेयर योर नेम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।